Good morning, students. Yesterday we have already seen the quantum numbers, that is azimuthal quantum number, magnetic quantum number, and spin orbital quantum number for different shells. Okay. Now the today's part is write orbital notation for electrons in orbitals with the following quantum numbers. Write orbital notation for electrons in orbitals with the following quantum numbers. First example, n is equal to 2 and L is equal to 1. Now here, first of all, what is n is equal to 1? N is equal to 1 means K shell. N is equal to 2 means L shell. N is equal to 3 means M shell. N is equal to 4 means N shell. K, L, M, N, O. K means 1, L means 2, M means 3, N means 4, and O means 5. So here the value of N given is 2. So which is the principal shell? L shell. And L is equal to 1 means L is equal to 0 means S subshell. L is equal to 0 means S subshell. L is equal to 1 means P subshell. L is equal to 2 means D subshell. And L is equal to 3 means F subshell. Okay. So N is equal to 2 and L is equal to 1. So therefore for N is equal to 2 and L is equal to 1, the orbital is, which is the orbital for N is equal to 2 and L is equal to 1? It is a 2p. 2 means 2 represents shell number, that is N is equal to 2, and P means L is equal to 1 means P. So this is the orbital. 2p is the orbital for N is equal to 2 and L is equal to 1. Second example, यहाँ पर मैं दूसरा एग्जाम्पल फिर से बता रहा हूँ, बाकी के एग्जाम्पल आपको सॉल्व करने हैं. N is equal to 4 and L is equal to 2. N is equal to 4 means which shell, which principal shell? K, L, M, N, N subshell, that is N is equal to 4. And L is equal to 2 means which subshell? It is a D subshell. So therefore the orbital representation is 4. N is equal to 4. So that's why 4D is the orbital. Okay. बाकी के एग्जाम्पल आपको छुड़ाने. N is equal to 3, L is equal to 2, N is equal to 3, L is equal to 0, N is equal to 1, L is equal to 0, N is equal to 4, L is equal to 1. Seventh example, N is equal to 5, L is equal to 3. Eighth example, N is equal to 6, L is equal to 0. Ninth example, N is equal to 5, L is equal to 1. Okay. ये आपको सॉल्व करना है. Okay. Next question is, describe the shape of S orbital. हमने 4 तरीके के ऑर्बिटल देखे हैं, SPDF. ओके, SPDF आर सबशेल्स. Okay, so different subshell. S subshell containing only one orbital, that is S orbital. P subshell containing 3 orbitals, Px, Py, Pz. D subshell containing 5 orbitals, Dxy, Dyz, Dxz, Dx square, Y square, and Dz square. And F subshell containing 7 orbitals, that is Fx cube, Fy cube, Fz cube, Fxyz, Fx square, Y square, Fy square, Z square, and Fx square, Z square. Okay, so these are known as orbitals. Now describe the shape of S orbital. This is the diagrammatic representation for 1s orbital and 2s orbital. Shape of 1s and 2s orbital, boundary surface diagram. This is the boundary surface diagram. So first point is, for each value of principal quantum number, that is n, for each value of principal quantum number, that is n, there is only one s orbital. K shell containing 1s orbital, L shell containing 2s orbital, M shell containing 3s orbital, N shell containing 4s orbital, O shell containing 5s orbital, etc. For each value of principal quantum number, that is n, there is only one s orbital. S orbital is least energy level. S orbital की energy
कम होती है बाकी के ऑर्बिटल से। पी डी एफ ऑर्बिटल से सबसे कम एनर्जी किसकी होती है? एस ऑर्बिटल। एस ऑर्बिटल इज लिस्ट एनर्जी लेवल इन ईच प्रिंसिपल शेल। फॉर एस ऑर्बिटल, एस ऑर्बिटल की एल की वैल्यू क्या होती है? 0। फॉर एस ऑर्बिटल एल इज इक्वल टू 0 and ml is equal to 0. Hence s orbital has only one orientation. s orbital has only वन ओरिएंटेशन। पी ऑर्बिटल के कितने ओरिएंटेशन होते हैं? 3, पी एक्स, पी वाई, पी जेड। वैसे ही एस ऑर्बिटल के ओरिएंटेशन कितने होते हैं? ओनली वन ओरिएंटेशन। फॉर एस ऑर्बिटल, पॉइंट नंबर थर्ड, फॉर एस ऑर्बिटल एल इज इक्वल टू 0 एंड एम एल मीन्स मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ml is equal to ml is equal to 0. Hence s orbital has only one orientation. The probability of finding electron is same in all direction. In s orbital, the probability of finding electrons is same in all direction because of s orbitals are non-directional in nature. S orbital is spherically symmetrical around the nucleus and it is non-directional in nature. s orbital का direction नहीं होता है, देखो spherical है। s orbital is spherically symmetrical around the nucleus and it is non-directional in nature. The value of n determines the size of an orbital. The value of n means principal quantum number. The value of n determines the size of an orbital. With increase in the value of n, the size of s orbital increases. As the value of n increases, the size of s orbital also increases. Okay, so what is the fourth point? S orbital is spherically symmetrical around the nucleus and it is non-directional in nature. Fifth point is the value of n determines the size of an orbital. With increase in the value of n, the size of the s orbital increases. So this is the shape of s orbital. Okay, now the shape of p orbital. See here, this is the diagrammatic representation for shape of s orbital. Next one is describe the shape of p orbital. It is very important. For p orbital, what is the value of L? L is equal to 1 for p orbital. For p orbital, L is equal to 1. For L is equal to 1, ml is equal to, for L is equal to 1, 1 लिखा नहीं है वहाँ पर। For p orbital, L is equal to 1. ml is equal to, what is the value of ml for L is equal to 1? So it is represent, the ml can be represented by formula 2l plus 1. So 2l means 2 into 1 plus 1. 2 1s are 2 plus 1 3. That is ml has three values, that is -1, 0 and plus 1. -1, 0 and plus 1. So for p orbital L is equal to 1, ml is equal to -1, 0, plus 1. Thus p orbitals have three orientation. S orbital has only one orientation, but p orbital has three orientation, that is px, py, pz. They are oriented along x and y and z axis. Okay, each p orbital has two lobes. Each p orbital has two lobes on the two sides of a nodal plane passing through the nucleus. Each p orbital has two lobes. यहाँ पर two lobes दिए देखो, px के लिए दो lobes है, पी वाई के लिए दो लोब्स हैं और पी जेड के लिए दो लोब्स है. सो टू लोब्स ऑफ पी एक्स ऑर्बिटल ओरिएंटेड ऑन एक्स एक्सिस, द टू लोब्स ऑफ py orbital oriented along y axis, and the two lobes of pz orbital oriented along pz orbital. So pz axis, the p orbital, each p orbital has two lobes on the two sides of a nodal plane passing through the nucleus. Okay, so p orbital has dumbbell shape. This is the dumbbell shape. स्कूल में हम लोग डम्बेल खेलते थे. डम्बेल देखो 15 अगस्त और 26 जनवरी को डम्बेल दिया जाता था. ओके, पीरियड लिया जाता था. सो दिस इज द शेप लाइक अ डम्बेल शेप. ओके, सो पी ऑर्बिटल हैज डम्बेल शेप. उसका शेप पी ऑर्बिटल का डम्बेल की तरह होता है. द साइज एंड एनर्जी ऑफ द 3 to p orbitals are same. The size and energy, these three orbitals px, py and pz has the same
size and same energy. The size and energy of the three 2p orbitals are same. However, their orientation in space are different because of first oriented along x-axis, second oriented along y-axis, and third oriented along z-axis. So that's why their orientation in space are different. The lobes of the three 2p orbitals are along the x, y, and z axis. Their lobes oriented along x, y, and z axis. Okay, the three 2p orbitals are designated as 2px. The three 2p orbitals are designated as 2px, 2py, 2pz. The size and energy of the orbitals in p subshell increases with the increase of principal quantum number. As the number of principal quantum number increases, as the value of n increases, first shell does not containing p orbital, second shell containing p orbital, that is 2p, third shell containing p orbital, that is 3p, fourth shell 4p, fifth shell 5p, sixth shell 6p, seventh shell 7p. So as the value of n increases, the size and energy of the p orbital in p subshell increases with the increase of principal quantum number. As the principal quantum number increases, the size and energy of p subshell increases. Okay, so this is the shape of p orbital. Totally 7 points are there. So this is very important shape of p orbital. Now describe the shape of d orbital. Describe the shape of d orbital. D orbital has 5 orientation: d x square y square, d y square z square, d x square z square, d x y z. Sorry, d x y, d y z, d x z, d x square y square, and d z square. These are the 5 orientation of d subshell. Okay. So for d orbital, L is equal to 2. For d orbital, L की वैल्यू क्या होती है? S के लिए L is equal to 0, P के लिए L is equal to 1, and D के लिए L is equal to 2. For D orbital, L is equal to 2. For L is equal to 2, M L is equal to, for L is equal to 2, ऊपर देखो वैसे ही L is equal to 1 है वहाँ पर. फॉर P ऑर्बिटल की शेप के लिए पहला ही पॉइंट देखो यहाँ पर, फॉर L is equal to 1, 1 लिखना रह गया है यहाँ पर. So for L is equal to 1, ML is equal to -1, 0, +1. Okay. Similarly here, for D orbital, L is equal to 2. For L is equal to 2, ML is equal to, what is the formula of ML? 2L plus 1. So 2 2s are 4 plus 1, that is 5. So D orbital has 5 orientation, that is -2, -1, 0, +1, +2. Thus D orbitals have 5 orientation. D orbitals have 5 orientation, and these orientations are dxy, dyz, dxz, dx square y square, and dz square. Okay, so they are designated as dxy, dyz, dxz, dx square y square, dz square. The first 3 d orbitals have double dumbbell shape. पहले 3 डी ऑर्बिटल के शेप कैसे होते हैं? डबल डम्बल. यहाँ पर शेप दिया हुआ है. ओके, वो बाद में देखो. सो द फर्स्ट 3 d orbitals have double dumbbell shape. They lie in xy, yz and xz plane. पहले 3 जो हैं dxy, dyz, dxz कौन से प्लेन पे लाई होते हैं? They lie in xy, yz and xz plane. Okay, the x square, dx square, y square is also double dumbbell. इसका भी शेप डबल डम्बेल ही है. The dx square, y square is also double dumbbell shape and lies along the x and y axis. और वो कहाँ पर लाई हो रहा है? देखो, x axis और y axis पे लाई हो रहा है. Okay, just wait. X axis and y axis. dz square is dumbbell shape. dx square orbital is double dumbbell. Sorry, dz square orbital is dumbbell shape along z axis with a donut shaped ring. They having the d orbital is a dumbbell shape along z axis. उसका भी शेप डम्बेल की तरह है z axis के, बट it around the z axis there is a donut shape ring, one donut shape along the z axis. Okay, so this is 5 of orientation of d orbital. The 5 d orbitals are equivalent in energy.
उन पांचों ऑर्बिटल की एनर्जी इक्वल होती है. The shape of 4D, 5D, 6D orbitals are similar to those of 3D orbital. The shape of 4D orbital, 5D orbital, 6D orbital are similar to those of 3D orbitals, but their sizes and energies are large because of as the value of n increases, the size and energy increases. 3D की एनर्जी क्या है? थर्ड एनर्जी. इट इज द थर्ड एनर्जी शेल. 4D की फोर्थ एनर्जी शेल है. 5D की फिफ्थ एनर्जी शेल है और 6D की सिक्स एनर्जी शेल है. सो एज द वैल्यू ऑफ एन इंक्रीजेस, द साइज एंड एनर्जी ऑफ the orbital increases. Okay, so this is the shape of d orbital. First is dxy, second one is dxy, dyz, dxz, and dx square, y square, and dz square. Okay, so this is the shape of d orbital. Now explain n plus n rule. Explain n plus n rule. Explain n plus n rule with respect to energies of orbitals. This is very important rule because of electrons are enters into the orbital in the increasing order of energy of orbitals. Electrons are enters into different available orbitals in the order of increasing energy of different orbitals. So N plus L rule is very important for entering the electrons in different available orbitals. Explain N plus L rule with respect to energies of orbitals. Answer is, the lower the sum n plus L for an orbital, the lower is its energy. जिस ऑर्बिटल की n प्लस एल की वैल्यू कम होती है उसकी एनर्जी कम होती है. द लोअर इज इट्स एनर्जी. द लोअर द सम n प्लस एल फॉर एन ऑर्बिटल, द लोअर इज इट्स एनर्जी. Second one is, the higher the sum n plus L for an orbital, the higher is its energy. जिस ऑर्बिटल की n प्लस एल की वैल्यू कम होती है उस ऑर्बिटल की एनर्जी कम होती है, और जिस ऑर्बिटल की n प्लस एल की वैल्यू ज़्यादा होती है उस ऑर्बिटल की एनर्जी ज़्यादा होती है. और अगर इफ टू ऑर्बिटल्स हैव द सेम n प्लस एल वैल्यू, अगर n प्लस एल की वैल्यू दो ऑर्बिटल की सेम आती होगी तो क्या होता है? इफ टू ऑर्बिटल्स हैव द सेम n प्लस एल वैल्यू, देन द ऑर्बिटल विथ the lower value of n is of lower energy. This is called n plus l rule. क्या देखो, थर्ड रूल क्या है? अगर दो ऑर्बिटल की n प्लस एल वैल्यू अगर सेम आती होगी तो जिस ऑर्बिटल की n की वैल्यू कम होती है उसकी एनर्जी कम होती है, और जिस ऑर्बिटल की n की वैल्यू ज़्यादा होती है उस ऑर्बिटल की एनर्जी ज़्यादा होती है. और जिस ऑर्बिटल की एनर्जी कम होती है उसमें इलेक्ट्रॉन्स पहले एंटर करते हैं, और जिस ऑर्बिटल की एनर्जी ज़्यादा होती है उसमें इलेक्ट्रॉन्स बाद में एंटर करते हैं. The electrons are enters into the orbital with lower energy of an orbital. Orbitals are filled in the order of increasing energy of different orbitals. Lowest energy orbitals are filled first, then electrons are enters into higher energy orbital. इलेक्ट्रॉन पहले किस में एंट्री करते हैं? जिस ऑर्बिटल की n प्लस एल की वैल्यू कम होती है उसमें इलेक्ट्रॉन पहले एंट्री करती है. सो ऑर्बिटल हैविंग लोवेस्ट वैल्यू ऑफ n plus L, or the orbital having lower energy, electrons are enters into that orbital first, then electrons are enters into the higher energy orbital. So n plus L is this is the rule. It is very important for entering the electrons in different available orbital. Now for example, 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p. These are the orbitals in the increasing energy of orbitals. इनकी एनर्जी इंक्रीज होती है. सबसे कम एनर्जी किसकी है? 1s. उससे ज़्यादा किसकी है? 2s. उससे ज़्यादा 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p. देखेंगे यहाँ पर n की वैल्यू यहाँ पर कितनी है? 1s के लिए 1, 2s के लिए 2, 2p के लिए 2, 3s के लिए 3, 3p के लिए 3, n इज इक्वल टू 3, 4s के लिए n इज इक्वल टू 4, 3d के लिए n इज इक्वल टू 3, एंड 4p के लिए n इज इक्वल टू 4. नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ l फॉर 1s? s के लिए 0, p के लिए 1, d के लिए 2 और f के लिए 3. Okay, so 1s L is equal to 0, 2s L is equal to 0, 2p L is equal to 1,
3s L is equal to 0, 3p L is equal to 1, 4s L is equal to 0, 3d L is equal to 2 and 4p L is equal to 1. सॉरी वहाँ पर 0 हो गया है, 4p p है ना, तो p मीन्स इट इज़ 1. L is equal to 1 for p orbital, 4p है इसलिए L is equal to 1, 0 बाई मिस्टेक हो गया है. सो नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n प्लस L? 1 plus 0 that is 1 for 1s, 2s के लिए 2 plus 0 that is 2. सो एनर्जी इसमें कम किसकी है? 1s की, इसलिए इलेक्ट्रॉन पहले किस में एंट्री करेंगे? 1s में, उसके बाद इलेक्ट्रॉन किस में एंट्री करेंगे? 2s में. ओके, नाउ 2p L is equal to 2, L is equal to 1 that is 2 plus 1 3 एंड 3s के लिए देखो 3 plus 0 3, दोनों ऑर्बिटल की एनर्जी सेम है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पहले किस में एंट्री करेंगे? मैंने यहाँ पर तीसरा रूल क्या कहा है? अगर n प्लस एल की वैल्यू दो ऑर्बिटल की सेम आती है तो जिसकी n की वैल्यू ज़्यादा है उसकी एनर्जी ज़्यादा होती है, और जिसकी n की वैल्यू कम होती है उसकी एनर्जी कम होती है. सो 2 plus 1 3, 3 plus 0 that is 3. So which orbital has lowest value of n? 2p orbital has lowest value of n, so that's why it is a lower energy orbital, and 3s orbital is the highest energy orbital. So because of that, electron first enters into 2p orbital then 3s orbital. Now here 3p and 4s की n plus l की वैल्यू क्या आती है? देखो 3 plus 1 that is 4 and 4 plus 0 that is 4, दोनों की सेम है, तो इलेक्ट्रॉन पहले लोअर एनर्जी ऑर्बिटल कौन है? जिसकी एन की वैल्यू कम है वो लोअर, सो एन इज इक्वल टू 3 इट इज लोअर ऑर्बिटल, लोअर एनर्जी ऑर्बिटल, एंड एन इज इक्वल टू 4 इट इज अ हायर एनर्जी ऑर्बिटल. वन मोर एग्जांपल that is 3d and 4p. 3d and 4p having the same value of n plus l that is 5, 3 plus 2 that is 5 and 4 plus 1 that is 5. So both orbital having same value of n plus l. So electron first enters into which orbital? Which orbital is lower energy orbital? N is equal to 3 for 3d orbital and n is equal to 4 for 4p orbital. So that's why 3d orbital is lower energy orbital and 4p orbital is higher energy orbital. So this is the increasing order of energies of different orbitals, different available orbitals. Okay, दिस इज द टूडेज पार्ट. आगे प्रिंसिपल्स है, अबव प्रिंसिपल है, पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है और हंट्स रूल है. उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, वो हम कल देखेंगे प्रिंसिपल्स, क्योंकि उसे अभी पढ़ाऊंगा तो अबव प्रिंसिपल को बहुत वक्त लगेगा. सो दिस इज सो दैट्स वाई दिस इज टूडेज पार्ट. अगर कोई डिफ़िकल्टी होगी ये पढ़ो ठीक से, और जो प्रॉब्लम्स दिए है वो लिखो, और ये टेबल्स पूरे पढ़ के बाय हार्ट करो. बाय हार्ट करने के बाद लिखना है और मुझे फ़ोटोज सेंड करने हैं. ओके, सो दिस इज your today's homework. Thank you.